Now see here, uh, now I want to store something permanently in the disk. Disk storage is permanent and execution memory, that is RAM storage, is temporary. जब आपका प्रोग्राम खत्म होता है आपका डेटा उस पर्टिकुलर रैम में से चल जाएगा, will be removed from your execution memory. If you want to store something permanently, then we have to store that on the disk. Disk यानी आपका हार्ड ड्राइव हो गया, SSD permanent. Now requirement is you want to accept something from the user and you want to store that into file. फिर उस फाइल को रीड करना है और वो डेटा को यूजर को देना हो सकता है जब भी रिक्वायर्ड है. So you want to do the file handling or you want to work with the files with the help of Java program. करना है आपको. Your Java program is going to interact with the file. Your Java program is going to interact with the file. So we have a file, and this file either you will read or you will, is your Java application, your file और ये आपका Java app. तो आपको जावा एप्लीकेशन यूज करके आपको प्रोग्राम ऐसा लिखना है कि जो फाइल क्रिएट कर सके, फाइल को डिलीट कर सके, फाइल को रीनेम कर सके, फाइल की परमिशन सेट कर सके, फिर फाइल होने के बाद उसमें रीड करना, राइट करना, ये सब कुछ आप विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम. नाउ आई वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल. यू कैन डू दैट मैन्युअली आल्सो, बट आई वांट टू क्रिएट 1 crore files. I want to create 1 crore files. Are you going to create that files manually? Will not create. I want to delete 1 crore files based on their name. I want to delete all the files whose name starts with a particular folder. So you have to manually sort and manually delete that. That is also time taking process. 1 crore files are there. Or I want to shift files from one location to another location. Now if there are like 1000 files are there, 10,000 files are there, you can do that. But I have crores of files. I want to rename the files. I want to add some prefix to all the file names. Say I have a lot of files. So I want all the file names should be starting with, let's say, IT Shala. I will add a prefix as IT Shala to all the files. So उनका file name rename करना है. So what will happen? So if I want to rename one CAR files, are you going to do that manually? I want to copy the content of one file into another file. ऐसे एक CR फाइल से मैं. Are you going to do that manually? No. I want to read the content of one file and do some manipulation, or I want to store something into the file. You have a lot of operations. So if you want to do this with the help of program, then use the topic as file handling. The file handling topic is related to or dealing with the files. So it is not only about files, a lot of things, but we are focusing only on file. Now what is file? File is a permanent storage on the disk. File is a permanent storage on the disk. Now usually files will be part of folder. Files will be a part of folder. On mostly files will be part of folders. तो आप files will be part of folder. Now why this chapter is so useful? So using file handling, we can create new files, delete files, rename files, then set permissions, get permissions. Then what we can do? मैनिपुलेट द फाइल. मैनिपुलेट मतलब रीड करना, राइट करना, और भी बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं फ्रॉम जावा एप्लीकेशन. यूजिंग फाइल हैंडलिंग वी कैन डू ऑल ऑफ दिस इन जावा प्रोग्राम. मतलब हम प्रोग्राम लिखेंगे जिसका करके ये सारा सब कुछ आप कर सकते हैं, राइट. नाउ रिमेंबर, so there are two different entities. One is your Java application, another one is file और folder. तो आप यहाँ इसका यूज करके क्रिएट न्यू फोल्डर भी कर सकते हो, क्रिएट
delete, rename folders also. You can create folders also. You can do that also. You can create folders, delete them, rename them. This also can be done. Now to perform these, now if you want to create a file or you want to perform any operation on file, whether it is creating a file, deleting a file, renaming a file, or writing to a file, reading from a file. So Java maintains one object. Java maintains one object which will have the information about your file. क्या करता है जावा? जब भी आपको लगता है कि इस फाइल के साथ आपको कुछ इंटरेक्शन करना है, फाइल क्रिएट हो ना हो, पहले जैसे आपने बोला कि मुझे फाइल के साथ कुछ काम करना है, so you will create one object which will maintain everything about that file. What is the location? What is the path? What everything will talk. Everything will be stored inside on that object. So every file, so Java maintains one object called as file, whether it is a folder or whether it is a file. For that, Java maintains one object called as file. कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट होगा? फाइल टाइप का. So Java maintains file class object for every file or folder. Now there are two file objects, matlab there might be two files or there might be two folders. So uniquely it is going to have one object which will maintain the information about that file or a folder. जो भी करना है आपको. So if you want to create a new file, so what we have to do first of all, we have to create a file class. And then using that reference, we will perform everything. It is kind of a representation. It is kind of a representation. So we will quickly do this. So there are a lot of classes. There are lot of classes provided by Java perform manipulations. There are a lot of classes provided by Java to perform manipulations. Now there is one of the class called as file class. File class is a concrete class. Is a concrete class present inside the java.io package. Is present inside the java.io package for input output. एक फाइल नाम का एक क्लास उन्होंने दिया है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है? आईओ पैकेज के अंदर. और उसका यूज करके यूजिंग फाइल क्लास क्या क्या कर सकते हैं? यूजिंग फाइल क्लास वी कैन क्या कर सकते हो? क्रिएट अ न्यू फाइल, डिलीट अ फाइल, रीनेम अ फाइल, और क्या कर सकते हो आप? क्रिएट, डिलीट, रीनेम, और क्या कर सकते हो? क्रिएट अ फोल्डर, क्रिएट, डिलीट, रीनेम कर सकते हो. उसके बाद आप ये सब कुछ सेम चीज क्रिएट, डिलीट, रीनेम अ फाइल और उसके बाद सेट परमिशंस फॉर अ फाइल, देन सेट और गेट. दोनों भी सेट भी कर सकते हो और क्या परमिशन उसका वो भी गेट कर सकते हो आप. के साथ और क्या कर सकते हो? गेट द फाइल लेंथ, गेट द फाइल लेंथ, फाइल का लेंथ कर सकते हो आप कितना है. और आप क्या कर सकते हो? उसका पाथ, गेट द फाइल पाथ का पाथ फाइल सिस्टम पर कहाँ पर है, पूरा पाथ आपको पता करना है. वेयर इज दैट, वो भी पाथ के ले सकते हो आप. और क्या कर सकते हो आप? Now I want to know how many files are there inside the given folder. Listing of files in the एक फोल्डर के अंदर क्या क्या फाइल्स है उसको लिस्ट कर, ये भी सब कुछ कर सकता हूँ. सॉर्टिंग कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें. So let's try to do that. I will create first thing. So I will try to create a file using file class. उसके लिए हम सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे. So I want to create a file. तो फाइल क्लास का हम यूज करेंगे. वेयर इज फाइल क्लास प्रेजेंट? जावा डॉट पैकेज. फाइल न्यू फाइल, और फाइल का नाम दे देते हो आप.
abc डॉट कंप्लीट पाथ नाम भी दे सकते हो, यू कैन राइट कंप्लीट पाथ नेम अलोंग विद द फाइल नेम। अभी मैंने बस क्या कर दिया है, बस क्या दिया है मैंने, बस फाइल का नाम। वेयर फाइल विल बी क्रिएटेड, द फाइल विल बी क्रिएटेड इनसाइड द करंट फोल्डर। अभी बस ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, फाइल क्रिएट नहीं हुआ अभी तक। अभी क्या हुआ है, बस फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नथिंग बट अ फाइल क्रिएशन। क्या बोल रहा हूँ मैं, फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएशन डज नॉट गारंटी फाइल क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन डज नॉट मीन फाइल क्रिएट। अभी तो फाइल क्रिएट नहीं हुआ है। फाइल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है फाइल डॉट गेट न्यू फाइल। और अगर फाइल क्रिएट करते टाइम कोई इशू आता है तो उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द नेक्स्ट टॉपिक विल बी लर्निंग, उसको डोंट वरी, वी आर जस्ट कॉलिंग द मेथड कॉल्ड एज क्रिएट न्यू फाइल। नाउ जैसी ये मेथड कॉल होगी, ये मेथड आपको रिटर्न टाइप करेगी ट्रू और फाइल, इज फाइल क्रिएटेड। अगर फाइल न्यू फाइल क्रिएट हुई है तो रिटर्न करेगी ट्रू, नहीं तो रिटर्न करेगी फॉल्स। मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ इज फाइल क्रिएटेड, फाइल क्रिएटेड, यहाँ पर लिखो आप इज फाइल। लेट्स रन दिस, और यहाँ पर देखो कोई फाइल नहीं है, रनिंग दिस। File created, true, file is created. You see where is the file? Yes, the file when it is created, just see the location when it is created. देखो, this file is created just to one. Now once again if I run this program, what will happen? What this method will return? False, क्योंकि फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो फिर से फाइल क्रिएट करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो इट विल नॉट क्रिएट द फाइल once again, फाइल इज ऑलरेडी। Now I want to delete the file, I want to delete the file. So this was create new file. So I want to create a folder also, I want to create a folder, create new folder। तो क्या करना है, फोल्डर क्रिएट करना है। तो हाउ डू आई क्रिएट दैट? बस आपको यहाँ पर लिखना है, फाइल की जगह पर आप बस बोल दो फोल्डर, और फोल्डर का नाम दे दो आप, लेट से आज का डेट का है 0201 जो द डेट, एंड आई वांट टू क्रिएट द फोल्डर लाइक दिस। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो फोल्डर डॉट mkdir। mkdir मतलब एक डायरेक्टरी, dir स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी। अब ये बोलेगा जब फोल्डर क्रिएट होगा तो ये बोलेगा इज फोल्डर क्रिएटेड, फोल्डर क्रिएटेड ट्रू और फॉल्स। 0 to 4 अभी फोल्डर नहीं है, ये क्रिएट होगा। बहुत सिंपल है, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने और उसका रेफरेंस यूज करके मेथड कॉल करी, और फिर उसने रिटर्न किया ट्रू और फॉल्स। अगर फोल्डर क्रिएट किया तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। कैन यू सी फोल्डर इज क्रिएटेड? यस, द फोल्डर जस्ट नाउ क्रिएटेड। इफ आई रन दिस वन मोर टाइम, व्हाट विल हैपन? फोल्डर क्रिएटेड। नाउ आई वांट टू डिलीट द फाइल, आई वांट टू डिलीट द फाइल। तो व्हाट इज द मेथड? बहुत सिंपल मेथड है, जस्ट लाइक दैट, डिलीट फाइल। फाइल का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज अ फाइल, और यहाँ पर आपको लिखना है फाइल डिलीटेड, से फाइल डॉट डिलीट, फाइल डॉट डिलीट। तो ये फाइल अगर प्रेजेंट है तो वो डिलीट कर देगा, फाइल डिलीट हो, फाइल डिलीट। वन सेकेंड इसको रन करो, फाइल उसको मिलेगा नहीं, सो इट विल रिटर्न फॉल्स। और सिमिलरली आई वांट टू डिलीट द फोल्डर, क्या करना पड़ेगा आपको? डिलीट फोल्डर। तो आप बोल दो यहाँ पर फाइल इज ऑफ
फोल्डर, और फोल्डर का नाम क्या था, हमने क्या दिया था, 2, तो 1, तो 2 फॉर your फोल्डर, सर फैंसी। Simple. Now what I will do, I will get some information about the file, demo file details. अब मुझे पता करना है कुछ चीज़, अब मैं फिर से फाइल क्रिएट करूँगा, आई विल जस्ट सिंपली दिस फाइल क्रिएट करूँगा, अगर नहीं है तो अब मुझे पता करना है कि उस फाइल का लोकेशन कहाँ पर है। आई वॉन्ट टू नो द फाइल लोकेशन, तो फाइल डॉट गेट एब्सोल्यूट पाथ, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ मतलब एकदम पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, सी कोलन एवरीथिंग, एवरीथिंग इट विल प्रिंट। सी है path file is c colon work slash and this is the complete path. Now sometime I want to know what is the length of the file, length of file का length क्या है, file dot length क्या रिटर्न करता है, let me tell you, it returns number of characters। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ good evening, what is the length, how many characters are there, 4 and 8 11 12, that 12 characters will return how many characters, what is the length, 12. Length of the file is now there are a lot of things नाउ आई वांट टू नो वेदर दिस इज अ फाइल और नॉट, क्योंकि ये रेफरेंस है और आपको पता करना है कि ये फाइल है या नहीं। तो इज फाइल रिटर्न करेगा, इज इट अ फाइल, इज इट अ फाइल, यस, ये रिटर्न करेगा। तो फाइल का मतलब होगा ट्रू, और ये रिटर्न करेगा फॉल्स, बराबर से प्रिंट करेगा लेंथ पाथ एंड इज इट अ फाइल, ट्रू, इज इट अ फाइल, ट्रू। अभी आपको रेफरेंस मिला होगा फाइल, दोनों दोनों केस में फाइल ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस होगा, तो आपको पता करना कि ये फोल्डर या फाइल है, राइट। Let's see one last thing and we will it up. So I have a file, I don't need to create the file, I will just want to check the file permission. Now what I'm going to do, I'm going to set the permission, permission क्या सेट करना है, set read writable, set writable equal to false। इसका मतलब क्या हुआ, permission set to, अभी आप फाइल देखो, फाइल में हम कुछ एडिट कर सकते हो। Now you are able to save this file, I have saved this। Now the moment I run this program, your file will become a read only, abc.txt will become read only। See this file, reader mode, I am not able to do anything, clear read only status, file is read only, you cannot do this here, file is now read only। What is the permission, you have set the permission, similarly you want to know what is the permission of this, you can get the permission, so get permission, what is writable, you can also get that, right? Now I will create one simple thing, I want to create bulk of files,
मुझे 100 फाइल क्रिएट करनी है एक फोल्डर के अंदर. हाउ डू आई क्रिएट? So I'm going to create a folder. Do we have the folder? Yes. I will create a folder first. तो उसको फोल्डर क्रिएट करते हैं, अदरवाइज फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स हम. आई विल क्रिएट अ फोल्डर और इस फोल्डर के अंदर हम सारी फाइल्स क्रिएट करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट 100 फाइल्स और 10,000 फाइल्स वन प्रोग्राम इटसेल्फ. तो फाइल क्रिएट बल्क. So how many files we are going to create? How many objects will be there? There will be hundreds. So let's say 1,000 files are the 1,000 objects. So I'm going to write a for loop which will start from, I will start from 1 to 100. And what I'm going to do, every time, every iteration, I'm going to create a file class object, file, and there I'm going to give the path. What is the path? This is the path. और फाइल का नाम क्या होगा? I, और ये I. इस फोल्डर के अंदर फाइल का नाम होगा i1 i2 डॉट txt डॉट i1.txt i2.txt. कितने फाइल्स होगी? 100 या 1000, जो भी करना है आप क्रिएट कर सकते. विल जस्ट डू दैट फाइल डॉट क्रिएट फाइल. दैट्स इट. और आप इसके बाद बोल सकते हो 1000 फाइल्स. रन दिस. Let me open this folder. See this, there is nothing. The moment I start running this program, look my सारी files, file creation done. File 1000 files has created 1000 files. Now I want to delete that folder. Delete that folder. Delete false. Why? Because there are files. You cannot delete a folder as files. तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये सारी फाइल्स है. मैन्युअली भी कर सकते हो फोल्डर ना. फोल्डर, हाँ फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, बट उसके लिए परमिशन. और नो आई विल जस्ट डिलीट ऑल. आप फिर से ट्राई करो. I will see there are lot of operations in the folder. फोल्डर में से मुझे फाइल की लिस्ट करनी है, सॉर्टिंग करना है, फिल्टरिंग करना है, बहुत सारी चीज़ें. वी विल टॉक अबाउट दैट फोल्डर्स के अंदर जो फाइल्स के